Hello everyone. Today we are going to discuss HIV in pregnancy. Now we know that there are two types of HIV virus. We have HIV-1 and HIV-2. So among this, the HIV-1 virus is more as compared to HIV-2 virus. मतलब one ज़्यादातर it's more common as compared to the two, right? So how we come to know about this? So first antenatal visit में all the pregnant women they undergo screening. ठीक है? First antenatal visit पे ही. ठीक है? जब सारी की सारी pregnant women आएंगी, all of them are going to be screened. बट ऐसा नहीं है कि कोई ज़बरदस्ती है. ठीक है? द वन who do not want to get screened, they can opt out. So this is known as opt-out approach, right? This means women can opt out from the testing. ठीक है? But it does not mean that we are going to leave that woman. No, we are going to counsel her again regarding the hazards of HIV to her and fetus, and again motivate her to get screened, right? But what about at village and sub-center levels, right? There also screening has to be done, not only for HIV, but we even do for syphilis. And this is done by the ANMs, right? Now, what is the test? This is the whole blood finger prick test, right? क्या है टेस्ट का नाम? whole blood finger prick test. मान लो दोनों पॉजिटिव आ गया, HIV पॉजिटिव अगर आ गया है, so we refer to the higher centers like ICTC, and there it is going to be confirmed by rapid tests. ठीक है? अगर syphilis के लिए भी पॉजिटिव आता है, then also we are going to refer and confirm by rapid plasma reagent test. ठीक है? Why are we so much concerned about HIV? Because the HIV infected pregnant women, females, they are having 10 times higher risk of getting infected with tuberculosis, right? Ultimately, maternal mortality can be there, prematurity can be there, low birth weight can be there, and perinatal TB can be there, right? So this is all the complications and effects of HIV. So how do we manage? Now, management include few cases. The first case is like there is a known HIV positive patient and she conceives and she's already on ART, right? So she's already having HIV. She know it and she's already on ART. Okay? That is antiretroviral therapy. So what is going to be the management? We are going to continue the same regime throughout the pregnancy, labor, breastfeeding and lifelong. ठीक है? तो उसने सेम मेडिसिन जो ले रही है वही कंटिन्यू करनी है प्रेगनेंसी के टाइम भी, लेबर के टाइम भी, ब्रेस्ट फीडिंग के टाइम भी, एंड लाइफ लॉन्ग उसने वही खाते रहनी है. ठीक है? Second case is a newly diagnosed case of HIV in a pregnant female. Like a pregnant female came and in the first antenatal visit आपको पता चल गया कि वो तो HIV positive है, तो अब आप क्या करेंगे? She is a newly diagnosed case. So we have to start the ART immediately, irrespective of कितना भी उसका gestational age हो, maybe वो first trimester में आई हो, second, third किसी में भी आई हो, आपको start कर देनी है immediately ART. ठीक है? Irrespective of CT4 count and WHO clinical stage. ठीक है? तो ये तीन चीज़ें आपने ध्यान रखनी है. हमें गेस्टेशनल एज से कोई फर्क नहीं पड़ता, CT4 काउंट से भी नहीं और WHO क्लिनिकल स्टेजिंग से भी नहीं, हमने ART स्टार्ट कर देनी है. अब वो कितने टाइम तक खानी है, कंटिन्यू रखनी है लाइफ लॉन्ग और नॉट, दैट इज अगेन इररिस्पेक्टिव ऑफ CT4 काउंट एंड WHO क्लिनिकल स्टेजिंग. ठीक है? अगेन उसको वो लाइफ लॉन्ग खानी ही पड़ेगी. ठीक है? जब ऊपर भी लाइफ लॉन्ग जा रहा है तो यहाँ पे भी लाइफ लॉन्ग जाएगा. ठीक है? सो व्हाट इज द रिजीम? ठीक है? व्हाट आर द ड्रग्स व्हिच यू आर गोइंग टू गिव? सो दीस थ्री आर द ड्रग्स. ठीक है? टेनोफोविर, लेमिफ्लुडिन, एफाविरेंस. ठीक है? 300 है, 300 है, 600 है एंड वंस डेली. ठीक है? ये सारी दिन में एक बारी लेनी है. ठीक है? सो यू हैव टू रिमेंबर दीज ड्रग्स: टेनोफोविर, लेमिफ्लुडिन एंड एफाविरेंस. 300 milligram, 300 milligram and 600 milligram. Okay? Then the next case arises like there is a HIV positive pregnant female with previous exposure to nevirapine or efavirenz in previous pregnancy. That means once in a lifetime she has been exposed to these drugs and now she is pregnant. ठीक है? मतलब उसने पहले कभी अपनी लाइफ में ये ड्रग खाई है. कौन सी? एफाविरेंस या नेविरापिन. नाउ व्हाट हैपेंस? नाउ दिस बिकम्स इनइफेक्टिव. नाउ तो आपको अब चेंज करनी पड़ेगी ड्रग, है ना? तो फर्स्ट टू आर गोइंग टू रिमेन द सेम, टेनोफोविर, लेमिफ्लुडिन 300 मिलीग्राम, 300 मिलीग्राम. अब यहाँ पे आप एफाविरेंस ऐड नहीं कर सकते क्योंकि उसका एक्सपोजर उसको ऑलरेडी हो चुका है पहले. ठीक है? नाउ अब यहाँ पे आपने क्या ऐड करना है? लोपिनाविर एंड रिटोनाविर. ठीक है? ये याद रखनी है. लोपिनाविर, रिटोनाविर, 2 टैब्स मतलब 2 टैबलेट्स ट्वाइस डेली. ठीक है? Now there is a additional drug which is known as cotrimoxazole prophylaxis. ठीक है? एडिशनल ड्रग हम अलग से ऐड करके दे रहे हैं. क्यों? क्योंकि इसमें कुछ बेनिफिट्स होते होंगे तभी दे रहे हैं. जैसे कि इट हेल्प्स रिड्यूस मॉर्बिडिटी एंड मोर्टेलिटी बाय प्रिवेंटिंग अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शंस. वी नो इन HIV अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शंस का कितना खतरा रहता है. सो दिस इज द ड्रग cotrimoxazole which is helping us fight against these such as pneumocystis, girovicine pneumonia, toxoplasmosis, diarrhea and other bacterial infections. ठीक है? बट व्हाट इज द क्राइटेरिया? क्या सबको दे देनी है हमने? नो. ये वाली हम CD4 काउंट देखेंगे इफ इट इज लेस देन 350 सेल्स. ठीक है? पर क्यूबिक मिलीमीटर. WHO क्लिनिकल स्टेज 3 and 4.
ठीक है। तो ड्रग्स तो हम इरिस्पेक्टिव ऑफ द गेस्टेशनल एज, CD4 काउंट एंड WHO क्लिनिकल स्टेज देते थे, लेकिन ये एडिशनल ड्रग क्वाट्रोमेक्सोल हम ऐसे नहीं देंगे, ठीक है। क्राइटेरिया लिखेंगे, ठीक है। Now, all the pregnant, these females, they should continue the prophylaxis throughout the pregnancy, and again, it is started regardless of the gestational age. Breastfeeding women should continue the cotrimazole prophylaxis when indicated and should not stop breastfeeding. ठीक है। ब्रेस्ट फीडिंग, अगेन दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि क्या ब्रेस्ट फीडिंग करनी होती है कि नहीं करनी होती है। देयर इज नो इफेक्ट, यू हैव टू कंटिन्यू द ब्रेस्ट फीडिंग, डू नॉट स्टॉप, राइट। Now next is a case 4 where the pregnant female is in labor with unknown HIV status. She's an unbooked case. Okay, so out of nowhere a female arises. We do not know anything about her. Okay, when we do not know anything, so we have to follow the universal precautions during delivery and continue. Okay, again we can do the whole blood fingerprint test. If it turns out to be positive, now this is a screening test, but we have to confirm it. Now if this turns out to be positive, initiate a 3-drug regime immediately. ठीक है, अगर स्क्रीनिंग पे ही पॉजिटिव आ गया तो 3 ड्रग कौन कौन सी थी? Tenofovir, lamivudine and efavirenz. ठीक है। एंड नेक्स्ट डे सेंड 3 रैपिड एंटीबॉडी टेस्ट फॉर कंफर्मेशन एंड CD4 काउंट्स टू ICTC, ठीक है। एंड अगेन द सेम, शी इज गोइंग टू कंटिन्यू ऑन द ART पोस्टमार्टम इफ एंटीबॉडी टेस्ट पॉजिटिव। नाउ this is important, nevirapine prophylaxis for breastfeeding in fact should be given for 12 weeks, ठीक है, as mother didn't receive any ART during antenatal period. Very very important. So for the first time now the baby is also going to go on to some prophylaxis. किस चीज का? nevirapine. कितने टाइम के लिए? 12 weeks के लिए, ठीक है। You know the reason, because the mother didn't receive any ART during the antenatal period, ठीक है। Which drug? nevirapine, 12 weeks. In whom? In pregnant female जिसका हमें HIV status पता नहीं है। Then a little bit about the HIV-2 pregnancy. This has a slower progression to AIDS, less transmissible from mother to child. Okay? But you should know that the drugs like nevirapine, efavirenz, they are not effective against the HIV-2. Okay? So how you're going to treat it? Again, we have to change this one, right? So HIV-2 को treat करना हो या co-infection of HIV-1 and HIV-2, the 2 drugs remains the same. Tenofovir 300 mg, lamivudine 300 mg, and again we're going to add the 2 drugs, lopinavir or ritonavir. This is 800 milligram and 200 milligram, ठीक है। And again some important point here is again the infant in HIV-2 is going to go through zerovudine prophylaxis for 6 weeks, ठीक है। वहाँ पे नेविरापिन था 12 हफ्ते के लिए, ठीक है। यहाँ पे zerovudine है for 6 weeks. Yes, you are free to go for the vaginal delivery irrespective of the CD4 counts, viral load, unless obstetric indication for cesarean is present, ठीक है। Now how we can prevent this parent to child transmission? There has to be, we have to minimize the vaginal examinations, avoid prolonged labor. You can give oxytocin to shorten the stages of labor, right? Avoid artificial rupture of membranes, early cord clamping, and use non-invasive fetal monitoring, right? And again, a revision is that breastfeeding is not contraindicated, right? Most common time of the vertical transmission is the last few weeks before delivery as compared to the intrapartum period, right? If the patient is not on ART, vertical transmission rate doubles, ठीक है। इसीलिए the patient has to go on ART, because then there are very less chances, only 1 to 2% chances, right? So that's all about HIV in pregnancy.